नमस्ते। नमस्ते। How are you? morning. How are you? कैसे हैं आप आंटी जी? जय माता। Fine. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, ज्यादा नहीं। हम आपस में बात करेंगे और कोई कंसर्न्स है शेयर करेंगे। मैंने कुछ मैंने भी देख के और स्पीच पैथोलॉजिस्ट से मैंने कुछ सीखा है। मैंने जो सीखा है वो मैं शेयर करूंगी। आज तो बहुत बेसिक रखेंगे, जैसे माउथ का एक्सरसाइज और आ बोलना, ऊ बोलना, वो तो बहुत बेसिक है आज के लिए। आपको जो भी डाउट है या जो भी आपको पूछना है, कभी भी आप पूछ सकते हैं। आपको जो भी फीडबैक देना है दीजिए। हम अगले सेशन को उसके ऊपर बेस करेंगे। थोड़ा आइडिया है अगले सेशन में क्या करना है, लेकिन आपका जो रिक्वायरमेंट है उसको देख के हम उसको शेप करेंगे अगले सेशन को। आज मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी, ज्यादा नहीं, स्लाइड ज्यादा नहीं है, लेकिन एक्टिविटीज ज्यादा करने के लिए कोशिश करेंगे हम लोग। हम शुरू करें? यस प्लीज। हाँ जी। थैंक यू। I can show the screen. काका जी बोल रहा हूँ। Can you see the screen? Not yet. Okay. You are seeing the share screen over there, na? Oh, in this we have to see the share screen. Oh, we have to share the screen just a minute. काका जी की जरूरत चाहिए कि ये सीखते हैं, ये मेडिकल का सीखते हैं, ये नहीं कि सीखते हैं मुझे मार्क्स लो। Share screen. एक minute. This is first time I'm trying to understand how to share the screen. There should be a share screen button over there on your screen. From there, you can share your screen and the presentation there. Okay, got it. It's here. Okay, got it. Okay, now we are seeing your screen. Whatever will come on your screen, we'll be able to see that. आज 31 है ना, 2 तारीख સુધી પાના લાલે કે દઈ દીધું, 3 તારીખ સુધી કોણ सा। Okay. We are able to see the presentation. कबाट खाली करेंगे ना, साइड जो सामान है पहले एडा नहीं है, सारे देख पा रहे हैं ना? पाड़ा नु लगाई दिंदा जी लगाई। सभी देख पा रहे हैं प्रेजेंटेशन? क्योंकि मैसेज हाँ जी। हाँ जी। आप हिंदी और इंग्लिश जितना भी हो सकता है दोनों में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ। Sir, Hindi is okay with everybody. I can speak fair Hindi. हाँ, that's fine. Yeah, I think that's fine with everyone. स्ट्रोक के बारे में तो हम बहुत कुछ सुन चुके हैं। इस्कीमिक और हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक का एक और इफेक्ट है अफेसिया। आज हम क्या सीखेंगे? हमको सब पता है, वी आर ऑल गोइंग थ्रू इट, उसी से गुजर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग अफेसिया, उसमें क्या होती है? बातें करने में दिक्कत होती है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में भी दिक्कत होती है, पढ़ने में और लिखने में। इन चारों चीजों में मेन होती है दिक्कत अफेसिया में। इसके सिवा मेमोरी में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आज हम इस सेशन में छोटे छोटे चीज कवर करेंगे। अफेसिया मतलब क्या है, उसमें कौन से तरीके हैं। हमको एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास असेसमेंट करवाना है, किस तरह का अफेसिया है, उसके हिसाब से वो हमें ट्रीट करेंगे। 4 तरह के अफेसिया है और ज्यादा भी है, लेकिन उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है किस तरह के अफेसिया के लिए कौन कौन सा ट्रीटमेंट करना है। लेकिन some types of aphasia, we have common tips to share with how to treat a person with aphasia.
So in today's session, we will see all these common points. बाद में मेरे पति कैसे एफर्ट डाला है उन्होंने इन 3.5 साल में, अभी कंप्यूटर में भी काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, क्या क्या हमने किया है ये सब करने के लिए आई विल टेल शॉर्टली. फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे बात करनी है जब किसी से अफेसिया होता है, उनके साथ कैसे बात करनी है और कैसे बात नहीं करनी है. और जब हम स्पीच थेरेपिस्ट से मिलते हैं, वो हमें क्या क्या गाइडेंस देते हैं, किस तरह से हमें टेलर मेड अप्रोचेस देते हैं, हमारे लिए अलग, आप सभी के लिए, एक एक पर्सन के लिए वो अलग से टेलर मेड करके देते हैं. कौन किस लेवल पे है उसके हिसाब से वो स्पीच थेरेपी प्लान करके देते हैं. और अल्टरनेटिव अप्रोचेस और क्या कर सकते हैं, जैसे टैब और एप्स, हमारे मोबाइल फोन पे एप्स मिलती है गूगल प्ले स्टोर में, वो सब क्या है वो भी हम देखेंगे. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जो ये माउथ का मसल्स है और टंग और लिप्स, इन सभी का एक्सरसाइजेस रोज करना बहुत जरूरी है. अगर मेरे पति भूल जाते हैं रात में 12, अगर भूल जाते हैं किसी दिन रात के 12 बजे में अगर याद आती है, तभी चालू कर देते हैं, वो सब चालू कर देते हैं. मतलब इट विल हेल्प टू फॉर्म द स्पीच. और खाना चबाने के लिए भी बहुत मदद करता है ये एक्सरसाइजेस. जब किसी को फेशियल पाल्सी होती है, ये राइट या लेफ्ट में ऐसा ड्रूपिंग, उसे भी करेक्ट करने में वो मदद करता है. और एक्टिविटीज इन स्पीच थेरेपी, छोटा छोटा एक्टिविटी जो आप घर में कर सकते हैं, और कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ हंसी मजाक करेंगे, कुछ आपस में बात करेंगे, ताकि ये सेशन इंटरेक्टिव हो और हम अगले हफ्ते फिर से एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ और आइडियाज मिल जाएगा हम सबको. अफेसिया एक डिसऑर्डर है जो एक पर्सन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इसको अफेक्ट करता है, और इट कैन अकर सडनली आफ्टर ए स्ट्रोक, नॉट जस्ट आफ्टर ए स्ट्रोक, इवन फ्रॉम ए ट्यूमर और एन एक्सीडेंट और ए ब्रेन इन्फेक्शन. इन चीजों से भी अफेसिया हो सकती है. प्रोग्रेसिव अफेसिया है जो बढ़ते उम्र के साथ भी हो सकती है. सिम्टम्स ऑफ अफेसिया, सिम्टम्स मतलब जब हम एक पर्सन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तब हम क्या क्या देखते हैं उनमें, और ये स्ट्रोक के बाद और हॉस्पिटल से आने के बाद भी यही हम देख सकते हैं उनमें क्वालिटीज जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है. ट्रबल स्पीकिंग, बातें करने में दिक्कत होती है. स्ट्रगल विथ फाइंडिंग द राइट टर्म ऑफ वर्ड, एप्पल बोलने के लिए कुछ और बोल सकते हैं, कुछ और भी बोला जाता है एप्पल बोलने के लिए. या कुछ मांगना चाहते हैं लेकिन वो वर्ड मुंह से निकलता नहीं, उनको पता होता है क्या बातें करनी है, उनको पता होता है, लेकिन वो राइट वर्ड निकलती नहीं है मुंह से. यूजिंग स्ट्रेंज और रॉन्ग वर्ड्स इन कॉन्वर्सेशन, हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखा था, किसी ने डाला था, हमें अच्छे से लिख पाता था पहले, लेकिन अभी लिखने के बाद पता चलता है कि वो रॉन्ग वर्ड है. राइटिंग सेंटेंसेस दैट डोंट मेक सेंस और ट्रबल एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, एक और स्ट्रोक ग्रुप है. बहुत अच्छे से ट्राई करते हैं लिखने के लिए, जब वो खुद मैसेजेस भेजते हैं, मैंने देखा है, लेकिन उस सेंटेंस में कोई मतलब नहीं होता. लेकिन जब वो ट्राई करते हैं, वो बहुत मेहनत करके लिखते हैं वो सब. They know what they want to express, but they're not able to find the right kind of words or the spellings. Speaking in short sentences or phrases, छोटी छोटी वर्ड्स यूज करके बात करना या वर्ड को ब्रेक करना. यूजिंग अनरिकॉग्नाइजेबल वर्ड्स, मेरे पति बहुत बार बात करते हैं, वो क्लियर नहीं होता, पर उसको पता है कि वो क्या बात करना चाहता है, क्या बातें करना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है. ही नोस दैट, बट ही इज नॉट एबल टू डू इट. डिफिकल्टी इन नेमिंग ऑब्जेक्ट्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं बाद में एक छोटे से एक्सरसाइज दूंगी. और ट्रबल रिमेम्बरिंग वर्ड्स, ये क्या होता है, रिपीटिशन रिपीटिशन और रिपीटिशन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. कई बार प्रैक्टिस करने के बाद एक एक वर्ड हम बोल सकते हैं.
अभी इन्होंने बोला नमस्ते, वो नमस्ते बोलने के लिए इन्होंने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, पहली बार नमस्ते नहीं आया, ये 3 साल का प्रैक्टिस है, अभी नमस्ते बोल रहे हैं। एरियाज ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन स्पीच प्रोडक्शन, हम सबको पता है, अब तो हमें बहुत बार हमने ब्रेन के पिक्चर को हम देख चुके हैं, किस पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या क्या फंक्शन कंट्रोल करता है। जहां पे इंजुरी होता है वो फंक्शन को दिक्कत होती है, या उस फंक्शन को जब प्रॉब्लम होती है उसको रिकवर करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इधर हम देख सकते हैं स्पीच के लिए टेम्पोरल, फ्रंटल लोब, थिंकिंग, स्पीकिंग, मेमोरी और मूवमेंट। उधर ही एक ब्रोकस एरिया है जहां पे अगर क्लॉट होती है या इंजुरी होती है तब स्ट्रोक होती है। ये अफेसिया में क्या होती है, हम जो बोलते हैं वो समझ सकते हैं लेकिन वर्ड्स वो फॉर्म नहीं कर सकते। ऐसे ही एक और एरिया है वर्निकीस एरिया, वर्ड रिकॉग्निशन, वो खुद से बहुत अच्छी तरह से बातें कर सकते हैं, उसको हम फ्लुएंट अफेसिया भी बोलते हैं। दे कैन स्पीक वेल बट व्हाट दे कैन स्पीक वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। इन ब्रोकस अफेसिया वी स्पीक involved in what we speak, but for but what they speak there is no sense and we don't understand. They also don't understand what they're speaking. These are different types of aphasias. The main intention of showing this is we are all in different levels of recovery and maybe different types of aphasia also. The type of aphasia, once this is determined, जब ये पता चलता है कि उस व्यक्ति को किस तरह का aphasia है, तभी ट्रीटमेंट का जो मेथड है या स्ट्रेटजी है वो नीटली स्पीच थेरेपिस्ट कैन हैव ए गुड स्ट्रेटजी ओवर विच टाइप ऑफ aphasia एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे कि मैंने अभी बताया ब्रोकस अफेसिया में इनको सब समझ में आती है लेकिन बोलना मुश्किल होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें देयर इज हाउ टू स्पीक टू अ पर्सन विथ ब्रोकस अफेसिया, वो अलग सा वीडियो है। हाउ टू स्पीक टू अ पर्सन विथ वर्निकीस अफेसिया, वो दूसरा वीडियो है, क्योंकि उनको बातें करना आता है लेकिन उनको समझ में नहीं आता। इनको बातें करना नहीं आता लेकिन इनको समझ में आता है। कम्युनिकेटिंग विथ पर्सन्स विथ अफेसिया, जिनको अफेसिया है हम उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करें। पहले हमको छोटे छोटे सेंटेंस इस्तेमाल करना चाहिए। यूज स्मॉल सेंटेंसेस एंड स्पीक स्लोली। वी हैव टू स्पीक स्लोली टू देम। इफ आई स्पीक फास्टली टू हिम ही सेज स्लो डाउन, धीरे से बोलना, या फिर से बोलना मुझे समझ में नहीं आया, धीरे से बोलना। स्टे ऑन वन टॉपिक एट ए टाइम, सिर्फ एक टॉपिक पे बात करेंगे तो क्विकली ये ग्रैस्प कर सकते हैं। अभी आप अपने माताजी के साथ फूड के बारे में बात कर रहे हैं, माँ आपको क्या चाहिए खाने के लिए। जब ये इनिशियल स्टेजेस में है रिकवरी के लिए, आप छोटे छोटे बातें या एक टॉपिक की बात करेंगे तो इनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है और बहुत अच्छी तरह से दे विल गिव आंसर्स टू यू। बट नाउ I can speak multiple topics at the same time. He can grasp 2 topics, 3 topics now because now he is progressing. इनके रिकवरी में प्रोग्रेस है, अभी ये 2-3 टॉपिक समझ सकते हैं। I will do it purposely at times. कई बार मैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही वो करती हूँ। बच्चे भी बातें करते हैं, मैं भी करती हूँ, देखने के लिए इन्होंने कितना ग्रैस्प किया। बाद में मैं पूछूंगी मैंने क्या बात किया, बच्चों ने क्या बात किया। कई बार ये परफेक्टली रिपीट करते हैं, बच्चों ने क्या बात किया, मैंने क्या बात किया। अभी क्या करते हैं, लैपटॉप पे वर्क करते हैं, उधर टीवी भी देखते हैं, बोलते हैं टीवी में ये आया, लैपटॉप में ये वर्क कर रहा हूँ। दिस वाज नॉट द थिंग 2 years बैक, सो दिस इज द प्रोग्रेस ही इज मेकिंग ग्रेजुअली।
speak to the person with aphasia, not about them. हम उनके साथ बहुत कुछ, we have to interact with them, we have to engage with them, and we have to tell them, yes, it happens like this, it will take time, we are all with you, हम लोग आपके साथ हैं, we will all help you, we will try our best, don't be depressed, it's fine, there are many people like us, they are also progressing, and speak variety of topics with them, give them lot of choice. Don't talk down or use baby talk. When he came out of hospital, we had to use baby talk. बच्चों जैसे ही इनका देखभाल करना था तब 2-3 महीने में he came back to that adult set of mind. Immediately we had to shift, like not talking to a baby with him. But when he had that injury, when it was fresh, when he came home, it took some time. But after that, we speak like an adult. Now he thinks like an adult, he talks like an adult, he makes decisions. It's like he is running the family. Be patient, allowing extra time for response. ये वर्ड फॉर्म करना होता है, वो बहुत टाइम लगता है. अगर हम इनसे कुछ पूछते हैं तो रुकना पड़ेगा आंसर के लिए. कई बार आंसर दे सकते हैं, लेकिन कई बार आंसर दे भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमको बहुत बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा. डू नॉट फिनिश सेंटेंसेस और इंटरप्ट. मैं ये गलती आज भी करती हूँ, सुधरने के लिए ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे घर का काम करना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है. इनका सेंटेंस मैं फिनिश करती हूँ, इनको थिंक करने के लिए वक्त नहीं देती. लेकिन अगर इनका स्पीच इंप्रूव होना है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होना है, इफ वी आस्क ए क्वेश्चन, अगर हमने इनसे एक क्वेश्चन पूछा है, वेट फॉर द आंसर. आस्क द पर्सन इफ दे वांट हेल्प इन फाइंडिंग द वर्ड. क्या आपको मदद चाहिए बोलने के लिए या वर्ड फाइंड करने के लिए? अगर पूछेंगे तो बोलेंगे वेट, मैं बोलूंगा, या मुझे मदद करो, या मेरे मुंह देखते रहते कैसे मैं वर्ड फॉर्म करती हूँ, ल कैसे लेती हूँ, ट कैसे लेती हूँ, भारत, अगर भारत बोलती हूँ कैसे माउथ वाइड ओपन करती हूँ. पूछते हैं कई बार कैसे वर्ड फॉर्म करती हो माउथ में, वो दिखा दो, वो बहुत हेल्प होता है. अगर आपके घर में किसी को आपको ट्रेन करना है, आप उनको दिखाइए कैसे मुंह से वर्ड आप फॉर्म करते हैं, आप प्लीज उनको दिखाइए, ये बहुत हेल्प करेगा. आज भी ये पूछते हैं कैसे वर्ड आप तुम फॉर्म करती हो, मुझे दिखा दो. ल कैसे ऊपर लेती हो, ल र ज, मैं दिखाती हूँ. अगर कोई स्वर नहीं निकलता, मैं दिखाती हूँ. ये थ्रोट से निकलता है स्वर क ग. इट बिकम्स इजी फॉर हिम. टॉक 1-to-1, नॉट इन ग्रुप्स. जब तक ये प्रोग्रेस हो जाते हैं, अगर आप इनसे बात करना है, इनके साथ बात करना है, टॉक ओनली टू देम. और जब ग्रुप में है, इन्वॉल्व देम. लेट देम नॉट फील आइसोलेटेड. Involve them in conversation in the group. Even if they say yes, no, or even if they show gestures, fine, right, anything fine. They are always part of the group. They are not separate and they are not different. When they are part of us, when they are with us, when we are with them, then improvement will happen gradually and we can see miracles happening. Every day they will settle a new word. You will feel it, you will find it. Be respectful. Aphasia affects speech, not intellect. अगर आप किसी भी वेबसाइट को देखते हैं, यही फर्स्ट सेंटेंस होता है, ये स्पीच को अफेक्ट करता है, इंटेलेक्ट नहीं. बच्चों जैसे इनको मत ट्रीट करो, अडल्ट जैसे ही ट्रीट करो. बिल्कुल भी इंटेलेक्ट अफेक्ट नहीं होता. कब होता है इंटेलेक्ट अफेक्ट? जब भी अस्पताल से आते हैं या कुछ सर्जरी होता है, कुछ दिनों के लिए रेस्ट होता है, बहुत रेस्ट चाहिए होता है, बहुत नींद चाहिए होता है, और सप्रेसेंट्स दिए डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब, डॉक्टर्स वुड हैव प्रिस्क्राइब्ड सप्रेसेंट्स फॉर देम टू स्लीप or to rest or to recover. That time, yes, decision making, or they may feel blurred, or they may find tired, but not after that. After that, once they involve themselves in all the activities of the home, decision making, and involving with relatives, seeing the TV, whatever, expressing their views, then
it will not affect the intellect. To not affect the intellect, we have to take great care. अगर हम इनको दबा देंगे, घर में ऐसा हो गया, हमको प्रॉब्लम हो गई, ऐसे बातें बिल्कुल भी घर में मत करना. We are lucky we are together. We are lucky we have them. बिल्कुल भी नेगेटिव बातें मत करना, तभी इंटेलेक्ट अफेक्ट होता है. This is what I feel. This is what I have seen. I have seen and met lot of stroke patients wherever we used to go for therapy. This is what they used to say, how he is like this, how he is like this, how he can do so much work, they are not able to do. That is because घर में माहौल बहुत शांत होना चाहिए और हंसी मजाक और खुशी भी होनी चाहिए. यस, प्रेशर होती है, सब होती है. अगर एक बार प्रेशर होती है, बाद में हमको उसे कवर अप कर देना चाहिए. मैं प्रेशर में था, अच्छा छोड़ दो, कोई बात नहीं, विल बी फाइन, वी विल डू वेल, एवरीथिंग विल बी ओके. ऐसे ही हमको बात करनी चाहिए. कभी भी उनको सप्रेस करने वाली बात कभी भी मत करना, क्योंकि वो मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से ये हो रहा है. उनको डिप्रेशन में जाने बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि जिनको स्ट्रोक होता है, मैंने देखा है, जो डिप्रेशन में जाते हैं बाहर लाने में बहुत मुश्किल होती है. जिनको स्ट्रोक हुआ होता है, अफेसिया तो उसके एक स्टेप आगे है. कभी भी प्लीज अपने घर वालों को डिप्रेशन में जाने मत दीजिए. उनके साथ बहुत इंटरेक्ट कीजिए, उनको बुक्स दीजिए, टीवी में जो आता है वो दिखाइए, क्या देखा, ये देखा, नहीं देखा, उनको जो पसंद है वो कीजिए. रिलेटिव से, अभी तो रिलेटिव्स आना जाना नहीं होता, लेकिन किसी से ऐसे ही फोन में बात करवाइए, आप स्पीकर पे डालिए, हेल्प कीजिए, बोलिए अच्छा है. दे फील नाइस इफ समबडी talks to them. They should not feel मुझे ये हो गया, रिलेटिव्स आना बंद कर दिया. फर्स्ट वही आता है, वो मत होने दीजिए आप. इन्वॉल्व देम इन एवरीथिंग. ट्रीटमेंट ऑफ aphasia after stroke. Speech language therapy helps person with aphasia in the first place immediately after stroke. It is most preferred. अगर आप अस्पताल में हैं, please meet a speech language pathologist in the hospital itself. All hospitals have a pathologist. If they don't have, हॉस्पिटल में ढूंढना पड़ेगा या किसी से पूछना पड़ेगा, कहाँ है, कहाँ मिलेंगे, ऐसे पूछ के किसी को ढूंढना पड़ेगा. I met through one of my school WhatsApp chat. I met a friend. इनको उनके पिताजी को हुआ था, तभी बात करते थे. वो 7 साल पहले की बात है, तभी बात करते थे. बच्चे अपने जिंदगी में बहुत बिजी थे, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे थे, तभी शादी हुई थी, सबको सेटल होना था. Nobody had intention not to help their father. They never had that intention. But what happened? They went to a good hospital. It seems during discharge they said, please meet the speech therapist and go. They couldn't meet that time. Then they met me. I guided them for some activities. Then they met another speech therapist. Then they said, yes, he is improving. That was after 7 years. Even he spoke to us over phone. His speech was blurred, but he was talking single sentences. Then afterwards, it seems he started asking his daughter, when will you call her? What exercises she will give me today? What activities she will give? Come, let us go see speech therapist. What activities he will give? I want to do well. He was seeing astrology. So he used to tell, it seems, this is your star sign. This will happen. This will happen. His level of communication was that in 7 years, they could not, because they were busy with their lives. It's not that they didn't love their father or didn't want to support him, but then they started feeling, yes, we could have done something. So this is what happens. Even we have faced it. Even though we met a speech therapist in hospital, we felt assessment is required at different intervals of time because they will be progressing. ये क्या करते हैं, कैसे हमारे मदद करते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, या हमारे देश में तो सिंपल से स्पीच थेरेपिस्ट ही बोलते हैं. पहले वो असेस द टेस्ट एंड लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच. जब वो आते हैं उस वक्त में इनका स्पीच कैसा है. सिर्फ स्पीच नहीं, वो ऑडिटरी भी चेक करते हैं, हम जो बोल रहे हैं क्या वो सुन सकते हैं. यूजुअली ऑडिटरी, यूजुअली जो हियरिंग होता है वो ठीक होता है, फिर भी चेक करते हैं. इनको भी बोला था, र और ल ठीक से नहीं निकलता था, र और ल, उसके लिए टेस्ट करवाइए. उसके बाद में र और ल सिर्फ माउथ के एक्सरसाइजेस से
क्लियरली बात कर सकते थे, फिर अभी र नहीं आता, ल आता है, र नहीं आता. Help restore as much of your speech and language as possible, reduce impairment. वो हमको एक प्लान करके देते हैं, ये करने से इम्प्रूवमेंट होता जाता है. एक और बात बताती हूँ, कई लोगों के लिए 2-3 महीने अगर बात भी नहीं करते, स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाता है. हमने देखा है, सुना है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी कई लोगों के लिए हो जाता है. कुछ लोगों के लिए स्पॉन्टेनियस रिकवरी नहीं होता. Don't feel bad, there are people to help. रिकवरी इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. 2 सालों में नहीं हुआ, आगे नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इनका रिकवरी पहले साल अच्छा था, दूसरे साल जैसे ऐसे प्लान था, पहले साल जैसा था वैसे ही चलता रहा, तीसरे साल अच्छा था, अभी तो 4th ईयर है, स्पीच रिकवर हो रहा है, लेकिन हम ज्यादा रिकवरी इनके कॉग्निशन में, इनके एक्टिविटीज में देख रहे हैं. सो एवरीथिंग इज हैपनिंग. फाइंड हेल्प यू कम्युनिकेट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. आपके पास कुछ एबिलिटी है, अभी है, उसको कैसे यूज करें, आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को, वो सिखाते हैं. क्योंकि when we came from hospital, the first day he had only us were remaining with him, totally all language and speech, nothing was there. The first day, my father and myself, we took lot of time to understand. He was asking for water, but we could not understand at all that he was asking for water. We found it very difficult that he was asking for water. So they will help us, they will teach us what can we do to make them express better. Provide information to patients and their relatives about aphasia. This is very important. We have to understand what is aphasia so that we can help our loved ones. Encourage the patient to get involved in variety of activities. सिर्फ 1 घंटे बैठकर जो ये स्पीच थेरेपी सब करते हैं हम लोग, वो काफी नहीं होता. जो दिन भर का काम करते हैं हम लोग, इनको एक पानी मांगते हैं, बाथरूम में जाते हैं, घर में वॉकिंग करते हैं, बच्चों से बातें करते हैं. Throughout the day, we involve him in talking. Throughout the day, you can help your loved one talk. First, start with 2-letter words. I will tell you. Encourage the patient to get better. Okay, fine. Alternative approaches, एक कंस्टेंट इंड्यूस थेरेपी है. जैसे फिजियोथेरेपी में भी एक कंस्टेंट इंड्यूस थेरेपी है. अगर दाएं हाथ को if left hand is stroke affected, tie the right hand, let them use only the left hand. That is constrained. ऐसे ही इस थेरेपी में भी बोलते हैं, don't use gestures, don't write, just let them talk. And this will strain the person. We have tried, but lot of research is going on in this, and they have said it will help to some extent. Melodic intonation therapy, please आप सभी ट्राई कीजिए. इनको कोई भी स्पीच नहीं था, सिर्फ 2-2 लेटर का बात करते थे. एक दिन क्या हुआ, मेरे पिताजी एक श्लोक बोल रहे थे, गुरु हरि गुरु हर गुरु ब्रह्मा, ऐसे बोल रहे थे. ये बाजू में बैठे थे, पूजा कर रहे थे. मेरे माँ बाप मेरे हेल्प के लिए इधर थे 10 महीने. इन्होंने साथ में very clearly he chanted the line, complete line. That day we met the speech therapist. That was his regular visit. That day we told him, sir, we are so totally surprised. He is telling shloka, but he is not able to repeat the words. From that day, the entire mode of speech therapy changed. It changed completely. What he did, 2-letter words he joined, 2-letter words, 2 words he joined, or 3 words he joined, and he made him sing. So he is singing everything. He started singing everything. For in Kannada, I want water. If we want to say I want water, in Kannada we say nange neeru beku. Neeru is water. He made him sing nange neeru beku. He sang nange neeru beku. He tried another. He sang that. That was after 4 months after stroke. Then what we did, we continued with this singing practice for all small sentences for 2-3 months. Then he said, slowly we will come out of this. We will come out of this singing, and try to make him tell the sentence
in a normal way. So that training took quite some amount of time, but singing definitely helped. There are persons who cannot talk, but who can sing very well, because that is in another part of the brain. Music is another part of the brain. Definitely music can be helped to improve speech. It can be used to calm the mind. There is one raga, Amruta Varshini. That raga, our doctor itself told this raga will help in speech. I will share it in the group. Raga Amruta Varshini, I will share it in the group. There is just music, and he also used to put Dr. Agarwal's sleep music for sleeping. We had written to them. They sent, the sleep music link. They said this will help in the brain recovery. I will share all that in the group. Alternative methods of communication. देखिए इसमें पहले है talking के अलावा gestures like drinking water, sleep, or hungry, or I'm feeling tired, or I want fan, something like that. Writing, even today he writes, but the therapist is telling he writes more, he doesn't talk. Please concentrate on his verbal communication. Drawing, and we have a lot of communication charts available. For example, if you go to Google, we have communication charts, but I don't know how much it will suit to persons in our country, if they like it or not, or age patients, because in West they use tab and they use computer, laptop, they use separate tabs for this with lot of apps. We have this computer generated voice to play messages aloud. So we have lot of apps wherein there are different screens, one for food, one for feelings, one for activities. The therapist said, if you're not able to progress in speech, you can buy a tab with an app. He can go out with that. What he wants, if he presses the button, it will speak. Like, I want to use the bathroom, or I am hungry, I want coffee. I did not prefer it because, for one reason at that point of time, because his speech was recovering. If we started using it at that point of time, maybe we will concentrate more on that and less on speech. We didn't use. Maybe it will help lot of other patients. So it is as per the person's requirement. It will help when there is lot of difficulty in speaking. If you are able to write or type, or if you are able to handle the tab, that person should be able to handle the phone or the tab. If we want to practice speech therapy, there are a lot of apps available in the Google Play Store. Some are free for some time to keep your loved ones busy, or you want them to talk, or you want them to improve in cognition. You can please visit jello.org. That is done by IITians of our country. Jello.org, and there is one more, aphasia.com. They also have lot of assistive devices also. जेलो ऐप बिल्कुल फ्री है, आप ट्राई कर सकते हो. उसमें बहुत सारे भाषाएं भी है, और we have tried जेलो ऐप. There is Tactus Therapy app, and it will definitely help to improve cognition, and it is required. It will keep them busy. They're happy doing it. They do it by themselves. Sometimes some help may be required. We may be required to stay with them for that. ये जो oral motor exercises है, ये बहुत बहुत important है. Very, very important. Even today, even at 3 years, he is doing it. If some patients are not able to produce sounds through their mouth, please practice exercises. There are some exercises, the physiotherapist, and what happens, how this will help? There will be drooling, like the saliva will fall out of the mouth. So it was happening with my husband for a long time. More before. Now it has reduced, but it happens sometimes because one side of the face, the muscles is not strong, and the lips, it doesn't sit, it doesn't close properly like a normal person. Even if they want to, looks like it is closing normally, but when they try to form a word, जब ये बातें करना चाहते हैं ना, they keep their mouth open for a long time. When they keep open their mouth for a long time, the saliva will fall down. Recently, we had an assessment with a speech therapist. She has given extra exercises. So this is how there are a lot of areas where the speech therapist plays a role.
she gave us additional exercises. Whatever the video she has shared with us, that also I've shared with you. 2 videos I've shared. The first video, this we used to practice regularly earlier. This is even on the Stroke India website also. There's one more exercise I have shared. This will help in facial palsy also. जब ये बातें करते हैं ना, आप नोटिस कर सकते हैं मुंह एक तरफ जाता है ना, जब स्पून से कुछ खाने के लिए ट्राई करते हैं तब मुंह एक तरफ जाता है. How it will help to improve the strength, control and coordination of oral muscles. ये muscles ये इनमें बहुत strength नहीं होता, एक तरफ में strength नहीं होता. एक tongue movement कर, this tongue, this jaws and this mouth all will help to form a word. When there is no strength, they cannot form a word because they don't know how to take the tongue up, down, forward. In the beginning, when he had stroke, what happened? We didn't know anything. That time when the speech therapist came, he said he doesn't have any sensation till the throat. He put a spoon till the throat, spoon throat में डाला इधर तक, सेंसेशन ही नहीं था. उन्होंने फिर से एक आइसक्रीम का स्टिक, कैंडी का स्टिक आता है, हमको सिखाया उन्होंने रोज टंग नीचे करने के लिए. धीरे धीरे 15-20 दिन में इनको थोड़ा थोड़ा इधर सेंसेशन आना शुरू हुआ. और जब हम स्पून कुछ अंदर डालते हैं क्या होता है, तुरंत हम रिएक्ट करते हैं ना, करते हैं. इनको उतना भी सेंसेशन थोड़ा भी नहीं था, इधर तक स्पून डालने तक. मुंह तो बहुत खोलते थे, लेकिन जब स्पून इधर तक डालते थे ना, ऐसे कुछ रिएक्शन ही नहीं था इनका. बाद में थोड़ा थोड़ा इनको सेंसेशन आना शुरू हुआ. उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, हमको भी सिखाया हॉट और कोल्ड का एक्सरसाइज. एक बाउल में हॉट वाटर, एक बाउल में कोल्ड वाटर डिप करो और स्पून में टच करो. बहुत हॉट नहीं, थोड़ा हॉट. वो भी सेंसेशन नहीं था, थोड़ा थोड़ा सेंसेशन आना शुरू हुआ हॉट और कोल्ड का टंग में और इधर तक. बाद में he became normal, but it took 2 months time. Around 2 months it took time. Then he was in tube feeding. Slowly they removed the tube. Slowly he started chewing the food. All these exercises help to chew the food also. खाना चबाने के लिए भी बहुत मदद किया. पहले उतना खाना intake नहीं था. Slowly even the food intake increased. When the person starts eating by themselves, then they will start gaining strength. That is always true. Even the doctor will say that. The main benefits are, it helps in improving the movement and coordination of oral motor muscles. It will help in movement of these muscles. जब हम बात करते हैं अभी ये स्पॉन्टेनियस है, लेकिन इसमें बहुत सारे मसल्स काम कर रहे हैं एक साथ में. टंग, लिप्स, थ्रोट एंड इवन वी आर ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग आउट. लेकिन इनको ऐसा नहीं होता. धीरे धीरे जब एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे दे विल स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग नेचुरली. एंड जिनको पीने के लिए मुश्किल होता है उनको इट विल हेल्प देम टू ड्रिंक वाटर बिकॉज दे आर डूइंग ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस. Sometimes they may take food while breathing in, they may cough it out. So slowly all this will be corrected. There are 2 videos I have shared. You can please look into 2 videos. They are by 2 different persons. But please do these exercises. It will definitely help to improve speech. He will do it regularly every day. But speech therapist has told better to do it in front of the mirror. In front of the mirror, you have to do it and do it slowly. She says, do it 2 times a day. Compulsorily, दिन में एक बार तो करते हैं. If it is in the initial stages of recovery, better to do it 2 times a day. Because earlier 3 years back, even we used to do it 2 times a day. अभी ये एक्टिविटीज करेंगे हम. छोटे छोटे एक्टिविटी हैं, लेकिन 3 साल बाद भी आज भी ये बहुत बहुत रेलेवेंट है कि हम ये एक्टिविटीज करें. क्योंकि र प्रोनाउंस कर सकते थे 2 साल बाद, फिर र चला गया. ल कर सकते थे, ल नहीं कर पाते थे, अभी फिर से ल कर रहे हैं.
मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, साउंड्स कहाँ से आता है। देखिए कैसे इनको ट्रेन किया। जब इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जब इनको सिर्फ अ साउंड ही था, जब ये घर से अस्पताल निकले तब भी स्पीच नहीं था, तब भी सिर्फ अ साउंड ही था। अस्पताल में सिर्फ एक बार अम्मा बोले थे, सिर्फ एक बार, सिर्फ अ साउंड था। कैसे इनको एक एक साउंड अक्षरमाला में, हमारे अक्षरमाला में एक एक साउंड अ आ ई उ ऊ स्वर और व्यंजन क ख ग घ ञ, कैसे इनको सिखाया। देखिए हमने क्या किया, मैं दिखाती हूँ। अगर आप एक किताब रखेंगे, कुछ भी पुरानी किताब, बच्चों का स्कूल का किताब, कुछ पेजेस बचे हुए, ऐसे ही किताब लीजिए, जो जो आपके समझ में आता है, जो बहुत सारे लोग बहुत एडवाइस देते हैं, आप लिख दीजिए। अभी भी 3 साल बाद में हर 2 महीने 3 महीने में मैं सब पेज टर्न करके देखती हूँ, क्या क्या मैंने लिखा है, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या छोड़ दिया है, क्या क्या आज भी यूज होता है। देखिए ये मेरा तीसरा किताब है अभी जो मैंने लिखा है। एक मिनट ये मेरा पहला किताब है जो मैंने इनके स्पीच के एडवाइस के लिए दिया था, तब लिखा था। कैसे एक एक स्वर निकल के आया मुंह से, एक भी स्वर नहीं था, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिल चुकी हूँ। स्वर कम होता, डायरेक्ट अल्फाबेट्स या डायरेक्ट बात करने के लिए हम अटेम्प्ट करेंगे, शायद मुश्किल हो सकता है। एक एक स्वर आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके साथ आप बातें कीजिए, जो घर में आपसे बोलने के लिए कहते हैं, या रिपीट करो, रामा बोलो, सिंपल सा वर्ड्स लीजिए। पहले आप सिंपल सा वर्ड्स लीजिए। दिस इज माई फर्स्ट बुक, आई हैव 3 बुक्स। सिर्फ जब एक स्वर था, कैसे माउथ एक्सरसाइज करवा के कैसे एक एक स्वर इनके मुंह से निकाला। देखिए प निकलने के लिए एक पफिंग एक्सरसाइज है, इनको पफिंग करना था और हमको होल्ड करना था। जब हम होल्ड करते थे, ये मुंह से एयर निकालते थे, एयर निकालने के समय प निकला, पहली बार नहीं निकला, बहुत बार करने के बाद प निकला। हम बच्चों के साथ ये खेलते हैं ना, बच्चे खेलो, ऐसे प निकला। प और ब और म तीनों भी लिप्स से निकलता है। यही एक्सरसाइज करवाया उन्होंने और प्रेशर चेंज करने के लिए बोला। वो सब समझ के करने के लिए कुछ वक्त लगा, लेकिन सब स्वर आया। पहले हमने कंसंट्रेट किया कि हमारे अक्षरमाला में जो जो स्वर है, पहले ओ मुंह से निकले। क और ग देखिए इधर थ्रोट से आता है, क ग। आज भी अगर नहीं बोल सकते, कुछ वर्ड मैं इनको रिपीट करने के लिए बोलती हूँ, या कुछ ये बोलना चाहते हैं नहीं बोल सकते, मैं फर्स्ट साउंड बोलती हूँ। अगर क नहीं निकलता, मैं ये दिखाती हूँ, तुरंत ये वर्ड बोलते हैं, हाँ स्वर इधर से निकलता है। फिर टंग देखिए, ल त ट न ड, सब टंग साउंड्स है। 3 तरह से साउंड्स निकलती है हमारे मुंह से। ये हमें पहले प्रैक्टिस करना है। अगर इसमें किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, कभी भी पूछ सकते हो, कितनी बार भी पूछ सकते हो। मुझे जो पता है मैं वो जरूर सिखाऊंगी। 3 तरह के साउंड से प, म और ब लिप्स से निकलता है। त, ट, न, ड, ल, सब आपको टंग इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए प, ब, म आप अपने टंग इस्तेमाल नहीं किया। ल, ड, न, त इसके लिए टंग इस्तेमाल किया, उसमें भी डिफरेंसेस है। न के लिए आपने टंग फोल्ड किया।
ल के लिए आप अपने ऊपर पैलेट को टंग टच किया। ये सब आप तब कर सकते हैं जब आप देखिए, जब हम नॉर्मल लोग बातें करते हैं इसको कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हम हमें इनको मदद करना है, हमें इनको ये सब सिखाना पड़ता है। देखिए ये तो हमने 1-2 साल किया है। के लिए देखो ऊपर जाता है। आज भी अगर इनको वर्ड फॉर्म करना मुश्किल होता है तभी दिखाते हैं ल त ड न। देखिए न के लिए हम टंग फोल्ड करते हैं, ल के लिए ल आगे लेके आते हैं, र के लिए र, ये एक्सरसाइज करवाने से र आता है। र, बच्चों के साथ हम खेलते हैं ना, बच्चे ये सब खेलते हैं ना, र कीजिए, प कीजिए, ब्रू कीजिए, ऐसे ही र निकला। र पहले नहीं निकला, बहुत दिनों बाद र निकला। देखिए बच्चे खेलते हैं ना, ये बच्चों का खेल है, छोटे बच्चे सभी खेलते हैं ये खेल, ब्रू करते, ऐसे करते करते र निकला। जिनको थोड़ा भी स्पीच नहीं है पहले उनको साउंड्स निकालने में कंसंट्रेट करना चाहिए। जब एक एक स्वर निकल के आता है ना तब अगले लेवल पे जा सकते हैं। अ निकल के आया और म निकल के आया। इस इजी बोलने के लिए क्या है, अम्मा। और अ निकल के आया, प निकल के आया। जब जो जो स्वर निकल के आया उसको जोड़ के एक एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया। सिर्फ 2 स्वरों का एक वर्ड, पहले सिर्फ वही करना है, 2 स्वरों का एक वर्ड। आज भी अगर आपको दिक्कत है 2 स्वरों को जोड़ के छोटे 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 आप वर्ड कीजिए जो उनको बोलने के लिए आसानी होती है। सिर्फ वही रिपीट कीजिए, दिन में 2-3 बार वही रिपीट कीजिए। और एक सिंपल सा एक्सरसाइज उन्होंने करवाया लेकिन उसका बहुत महत्व है। देखिए ई ओ रिपीट करना। कैन यू रिपीट? ओ आज भी करते हैं ये ई ओ साउंड्स, ई ओ। और अभी बोला मैंने रिपीटिशन ऑफ लिप, टंग और थ्रोट साउंड्स, ये तो 1 साल तक करते थे। सभी साउंड्स, लिप साउंड्स क्या है वो रिपीट करो, लेकिन किसी को मदद करना पड़ता है, साथ में बैठना पड़ता है। टंग साउंड्स हमको दिखाना पड़ता है और इनको करना पड़ता है। ये तो साउंड लेवल का है। मैंने एक चीज सीखा है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी बोलने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए भी जिनको अफेसिया होता है उनको मुश्किल होता है। पार्ट्स ऑफ द बॉडी। 3 महीने बाद क्या हुआ, स्पीच थेरेपिस्ट ने बोर्ड में लिख के पूछा, आई ब्रीथ थ्रू माई, मैं हाउ डू आई ब्रीथ, and he wrote mouth, ear, nose. He selected ear. That day I was shocked. I was thinking he is normal, everything is fine, everything is okay. That day I came to know, I thought maybe he can't understand anything that day, but I didn't express anything. That day the therapist told it is difficult for them to identify the parts of the body or repeat them. Even today, even recently when we tried ear, he was able to say nose independently, eyes independently, but he was not able to say ears. It was difficult for him to say ears. Some part of the day, help them say the part of the body, bring them awareness to the parts of the body so that if they have some inconvenience somewhere, कुछ acidity है दिखाने के लिए, help them to express about themselves. Awareness to the surroundings. They have to be aware about their surroundings. कुछ पानी चाहिए, basic things what they need, पानी, medicines, bathroom, help. ये सभी पहले इनको सिखा दो। कुछ साइन लैंग्वेज या सिंबल, इसके लिए एक है, या कुछ शीट में लिख दो। बाथरूम, एक शीट ले लो पेपर, बाथरूम, खाना, सोना है, टायर्ड हूँ, ये सब कुछ चीजें जो रेगुलरली चाहते हैं ना, आप एक शीट पेपर पे आप लिखा दो और इनको सिखा दो। अगर कम्युनिकेशन बहुत कम है, let them show it what they are feeling. These things are available in Google as communication boards. We can download, we can print them.
अब अगर अभी प्रिंटिंग का फैसिलिटी नहीं है, बाहर नहीं जा सकते, आप खुद के लिए एक शीट पेपर ले लो. By now you would have observed them, what all they can do, what help they want, urgently they may want. First thing is bathroom or tiredness or sleep, or I don't want to do anything. They may not feel like doing anything. That also you write down. I don't want to do anything, or watch TV, or listen to music, or come here, sit next to me. I want to talk to you. They may want to spend time with you. That also make a note of it. Write big. Write it big in a sheet of paper. Let them select what they want. This is how we initiate communication with them. Okay. Then please concentrate on repeating sounds in Aksharmala and alphabet chart. अगर इनको कोई भजन अच्छा है, कोई पुराना हिंदी का गीत अच्छा लगता है, कोई अपना फेवरेट आर्टिस्ट है, वो सब डाल दो आप, और देख लो 3-4 दिन बाद बहुत अच्छा सा गाते रहेंगे. ट्राई स्पीकिंग 2 लेटर सिंपल वर्ड्स. वही बोला ना, आप एक लिस्ट बना दो ये जो बात कर सकते हैं. एक हफ्ते के बाद उसमें 5 और डाल दो, उसको रिपीट करवा दो आप. One very important thing for conversation is ask yes or no questions. देखिए, you want to do physiotherapy? Yes. You want to do it now? No. No. Yes or no questions is very important. They will be able to express their feelings in that yes or no questions very clearly. That is the first step to communication. Please try that. Yes or no questions. Then try asking a question, like repeating 2 words one after the other. You're going here and there. You tell like pen, pencil. Pen. I said 2 words. Pen, pencil. Thank you. You have to repeat. We are doing repetition. Pen, pencil. Pen and pencil. Try repeating 2 words at a time. छोटा word. Try repeating 2 words. इस तरह से आप बहुत वर्ड्स आप रिपीट कर चुके होंगे, जो आप रिपीट कर सकते हैं. अगर रिपीट नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है. आज नहीं किया कल करेंगे, कल भी नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, परसों करेंगे. लेकिन आप करोगे, थोड़ा करोगे. कई दिन ऐसा होता है सबको आप सरप्राइज कर दोगे. हर रोज एक नया वर्ड आएगा और आप इतना खुश रहोगे. आप देखो, जब भी एक नया वर्ड होता है ना, वो एक सेलिब्रेशन ही होता है. आस्क मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. देखिए, आपको बहुत आसानी से पिक कर सकते हैं. यू वांट रोटी, चपाती. चपाती. इनको चपाती चाहिए. कुछ भी आप पूछो, आप इनको चॉइस दो. आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए. Is we have written on this board, is this black या pink? Pink. If you ask like this multiple choice questions, definitely they will grasp the answer. Maybe they are not able to repeat it, but they will do it gradually. They will do it. एक और बात है, asking questions with single word answer. एक क्वेश्चन पूछो जिसमें एक सिंगल वर्ड का आंसर होता है. इवनिंग व्हाट डिड यू ड्रिंक? ड्रिंक. You drank something evening before the session. What did you drink? Taffy and Biscuit. So you try to ask a question which the answer is a single word. These are some small things. These are small things, but they are very relevant. Even after few months to years of aphasia, it will definitely help to improve the speech. ये नंबर का चार्ट है ना, प्लीज इंट्रोड्यूस देम टू नंबर्स एंड अल्फाबेट्स का चार्ट होता है ना. आप लिखो, आप प्रिंट करो, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप ऐसा नंबर्स का चार्ट होता है ना. Ask them to identify the numbers 1, 2, 3, 4. पहले इसको सिखा दो, बाद में इनसे पूछो where is 25, where is 11. 25, 11 सब बोलना मुश्किल होता है. slowly करो. First 1 to 10 they can tell. Then ask them to identify numbers on the chart. Similarly, take an alphabets chart.
Ask them to identify the alphabet on the chart. For example, आप माँ बोलते हो, माँ किधर है, माँ दिखाओ, आप बोलोगे. So she will try to show माँ. She will try to show, माँ मुझे 5 दिखा दो, 5. She will try to show 5. She will try to show 5. Then you can make her repeat that word. 5, 5. धीरे से बोलो. Make them try to repeat that word 5. अगर आपको लगता है कि उन्होंने प्रोग्रेस किया है, अगर वो प्रोग्रेस करते हैं, तब आप एक स्लेट, बोर्ड या पेन कुछ भी ले लो जो आपको मिलता है. हमने बोर्ड इसलिए रखा है क्योंकि मेरे पति लेफ्ट हैंड से लिखते हैं. पेन में इनको मुश्किल हुआ क्योंकि पेन का डायमीटर छोटा होता है, लेफ्ट हैंड में पकड़ना इनको मुश्किल हुआ, इसलिए हमने एक बोर्ड लिया. इस बोर्ड में जो पेन से लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड का मार्कर, ये थोड़ा मोटा होता है क्योंकि पहले ये राइट हैंड से लिखते थे, बाद में इन्होंने लेफ्ट हैंड प्रैक्टिस किया. तब जब मार्कर से लिखना शुरू किया, कंफर्टेबल लगा इनको. या स्लेट से लिख सकते हैं, होता है या मोटा पेन, जो भी आपके पास है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे. बाद में इनको थोड़ा 2 + 5, something like that, small sums of addition and subtraction. This is introduction to numbers. Slowly you are introducing the concept of numbers. थोड़ा आप करो, बाद में कैसे प्रोग्रेस करना है आपको ही पता चलता है. जब ये सिंगल डिजिट नंबर का एडिशन करते हैं, बाद में डिजिट नोट क्या है आप से बोलते हो. नोट that she knows, she will know. Next you can give another 10 rupees note. You can ask her, wow, how much is this 10? दोनों मिला के क्या होता है. Like this, once you start actively participating, you will get hundreds of ideas to make them talk. अगर कोई ड्राइंग में इंटरेस्टेड है, छोटा ड्राइंग भी कर सकते हैं. आप न्यूज़पेपर ले लो, किसी भी किताब ले लो, कुछ भी ले लो. पिक्चर्स आर वेरी हेल्पफुल टू मेक देम टॉक. कुछ भी ले लो आप, कोई भी किताब, स्टोरी बुक, मैगजीन या टीवी, कुछ भी ले लो. फॉर एग्जाम्पल, आई विल शो यू मैं पिक्चर. ये क्या है मैं पूछती हूँ, व्हाट इज दिस? Saturn. Oh, today this is his new word. He said independently Saturn. ये space दिखाया. First time he said the word Saturn. I thought he will find it difficult finding the word. He said Saturn. वैसे ही अगर आप एक्टिवली करते रहेंगे तो रोज ये एक नया वर्ड बोलते जाएंगे. अगर आप इस नए वर्ड को आपके बुक में लिखो और इनसे रिपीट करवाओ. एवरी डे प्लीज इन्वॉल्व देम इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग फॉर द डे. आज आप क्या क्या करना चाहते हो, बोला आज हम क्या करेंगे. आप पूछो, कुछ माउथ का एक्सरसाइज करेंगे, कुछ फिजियोथेरेपी करेंगे, 10 बजे थेरेपिस्ट आएंगे, मुझे बाहर जाना है, बाद में आके करेंगे. आप देख लो, पहले जेस्टर्स से शुरू करेंगे, बाद में छोटे बात भी करेंगे. डिसीजन मेकिंग आप इन पे छोड़ दो. जो पहले से ये डिसीजंस लेते थे वो उन पे ही छोड़ दो. वो क्या डिसीजन लेना चाहते हैं. बारिश हो रही है, क्या करें, क्या खाना चाहते हो, मैं थोड़ा शॉप होके आता हूँ. तो ये बोलेंगे बारिश हो रही है, मत जाओ, बाद में जाओ. अच्छा ठीक है, जो पहले करते थे सब डिसीजंस उन पे छोड़ दो. अगर आपको वो सही नहीं लगता, आप बोलो नहीं ऐसा नहीं है, हम ऐसा करेंगे. दे विल फील नाइस दैट यू आस्क देम. चूजिंग द एक्टिविटी दे वांट टू, उनसे ही पूछो वो क्या करना चाहते हैं. वॉचिंग द कंटेंट दे लाइक, टीवी पे कुछ पसंद होगा ना, वो जो वॉच करना चाहते हैं वो वॉच करे. आप भी 5-10 मिनट उधर रहो और छोटा क्वेश्चंस पूछो उसके बारे में. क्या देखा, क्या चल रहा था, उसमें भी आप एस नो क्वेश्चन पूछो. ये देखा, ये नहीं देखा, कौन सा कैरेक्टर था. अगर उनको बहुत पसंद है, देखने छोड़ दो, पूरा 1 घंटा देखने छोड़ दो. बाद में पूछो
तब उसको मेमोरी रिकैप भी हो जाएगा, उसने क्या देखा। ऐसे मेमोरी रिकैप भी करना बहुत अच्छा होता है, आज भी करते हैं मेमोरी रिकैप। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग, आज सुबह डिड यू डू स्पीच थेरेपी? Yes. हु डिड विथ यू? श्रुति No. और सुकृति? Shukrati. श्रुति डिड नॉट डू, No. व्हाई? Mahendra. Cindy. Mandamikito. Cooking. Thing. Cooking. Shruti was cooking. So now I'll ask him, after this session is over, you want to do physiotherapy? Yes. I am busy. Can you do some things on your own? Yes. Do you want help? No. Help. Yes. Beda. Help beda. No help. So try to initiate a conversation and involve them in whatever you can do as much as possible. Choice of food to be prepared. Ask them in between what food they like to eat. क्या वो सही है, क्या उसमें सॉल्ट सही है, खट्टी है, मीठी है, उनसे पूछो, बहुत खुश लगेगा। और दे विल इनिशिएट टॉकिंग विथ यू। वॉच रीडिंग करंट अफेयर्स, उनके साथ पढ़ो, उनके साथ टीवी देखो, कुछ न्यूज देखो, ताकि उनको पता चले क्या चल रहा है। अगर हमको करंट अफेयर्स नहीं मालूम, कुछ भी नहीं हो जाएगा, नथिंग विल हैपन। जो वर्ल्ड चलता है वो चलता रहेगा, वी आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, बट दे शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। दे शुड नॉट फील दे आर लॉस्ट, दे आर समवेयर, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप, दे डोंट नो एनीथिंग। लेट देम वॉच टीवी, थोड़ा न्यूज, तो उनको भी पता चले कि क्या चल रहा है बाहर। और आप सभी थोड़ा थोड़ा बात करो, थोड़ा थोड़ा आप खुद के बारे में बोलो सभी। डबल मस्का। नमस्ते। Namaste. कैन वी अनम्यूट? Namaste. 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 Speaking. Speaking. Mataji speaking. Namaste. 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 वो आपके बेटे हैं? वो आपके बेटे हैं आपके साथ? हाँ। बेटा, बेटा। दीकरो, दीकरो। फ्रेंड। अच्छा अच्छा, ठीक है। Oh, she is speaking so nicely. Very nice. Very nice. केम छो? केम छो? How are you feeling? केम छो? मजामा। 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 कैसा था सेशन? सिंपल था, समझ में आया? नहीं, सेशन कैसा था? समझाएगी। Oh, you could Shruti, understand? you are a very good teacher. Shruti, you are a very good teacher. But I have spoken for a very long time. No, you are a very good teacher. Thanks so much for Anybody, sharing your views. anybody, any help, any time, I can talk, because while working, I can talk on phone. So you can call, you can talk, you put a query, I will take time to reply, because first time when I replied to her, it was very late. I took 1 day time to reply, but talking or WhatsApp call या video call, मुझे जो आता है मैं वो हेल्प करूंगी। अगर नहीं आता थोड़ा वक्त दीजिए, सीखे तो भी करूंगी। See what I would request, मैं सभी को बोलूंगा,
थोड़ा थोड़ा बता दें, या तो अपने उनके रिलेटिव उनके बारे में, अगर वो यहाँ नहीं है तो, क्योंकि मीटिंग का पर्पस ये है ज्यादा कि आपस में बात करें, एक्सरसाइज करें, आपस में बात करें। जब भी ये मीटिंग्स हम आगे भी करेंगे तो उनमें अभ्यास का, जैसे श्रुति जी बोल रही हैं, उसका ज्यादा पुट रहेगा, ज्यादा हम चाहेंगे, उससे ज्यादा फायदा होगा। थ्योरी तो है लेकिन ज्यादा फायदा उससे होगा। तो अगर कोई ऐसे हैं यहाँ पर अभी, जैसे मैं नंदा कुमारी जी को देख रहा हूँ, नारायणन जी को देख रहा हूँ, रामा कृष्णा जी को देख रहा हूँ, जिनको मैं पहले से जानता नहीं हूँ। प्रशांत शायद आकांक्षा के साथ हैं। हाँ प्रशांत, तो वो अपना माइक अनम्यूट करके भी अपने बारे में कुछ बताएं, कुछ मे बी सम आइडियाज फॉर द फ्यूचर सेशंस, what is their present status or the stroke affected status, and we would certainly like going forward more interactions on such kind of meetings, because it's a practice session. That is what the focus is here, is on actual conversations. So anyone can unmute now and tell us something about. I'm seeing Ambika ji, she's an SLP, maybe she can, expert in speech language pathology, maybe she can come in with her views also. Please unmute and हिंदी में या इंग्लिश में जो भी आप कंफर्टेबल समझें कुछ बोलें, कुछ बताएं क्या स्टेटस है। हाँ प्रशांत, I can see you, प्रशांत जी। आकांक्षा जी, Hi sir, hello everyone. He's not with me right now. Actually, we just went to see our daughter. I told Shruti. Wow, Right. great. So yeah, he's very tired. He's like resting right now. But I wanted to Let be him, part let of him. it. Let So him. the tips you gave, Shruti, thankfully, by God's grace, my God guided me, and 80% of the things I'm doing the same way, exactly the same way you have mentioned. Great, And great. He's to say 1 to 2 words, and we went to see our daughter. We saw her after good 3 months, and these 2 days were so fulfilling. You know what? He has not spoken in, he, like, for the first time he spoke in 5-word sentences. Wow, clap for him. And- You will all clap for him. It was an emotional healing which happened after seeing his own daughter, holding her up after so long. There's some, like, he's emotionally recovering. Let him, let I him. saw that in these 2 days. And he literally himself initiated talking. He wanted to say as much as he could, and he could feel himself that he's able to speak so much. He told me, he woke me up in the middle of the night and he told me, Akansha, speech aa rahi hai. Wow. Speech aa rahi hai. God bless So, you. huh? this is such an achievement for me. This is such an achievement for both of us. We are really overwhelmed with this emotion because हम लोगों ने अभी तक parenthood in true sense experience ही नहीं करा है. We have 18-month-old daughter, but we have not been able to keep her with us actively because of the sessions and the therapy thing. I have been taking care of it since morning to night. So with baby comes a lot of responsibility. I didn't want it to keep her neglected, but I saw this change in these 2 days. And yeah, I am thinking, I'll keep her with me. I'll plan to keep her with me now. Good, I'll good, good. do something about it now. Can I? Actually, So, that yeah. may be a good idea. That may help also, when a child is around, Yes, that can help also. like So, he's like नायरा के लिए ठीक होना है. नायरा यार ठीक होना है वो यही बोलने लगे हैं कुछ 1-2 महीनों से. he's like मुझे ठीक होना है, नायरा के लिए ठीक होना है. So yeah, that can motivation is very important. Motivation होती है अपने आप recovery होती है. And the pointers you gave, Shruti,
I have been working on those things exactly. पहले आ, ई, ऊ, ओ, यू sound से मैंने. I used to take a diary and I used to write these sounds. A, E, U, O, A. Then I used to switch on the timer and I used to make him say these sounds individually and make him see for how long you can hold this sound. Like so for how long you can do this sound. So he used to stop the timer himself. He used to note down the seconds. I had made this diary and he used to note down for each sound how many seconds he had. Like initially he was able to do for only 5 to 10 seconds. The day we started, then gradually he's able to hold it up till 45 to 50 seconds as well. So gradually the time is increasing and it has really like helped him. Like he's not his original, the initial sound is still not back, but I feel like it has helped him open the voice box or something. I don't know. He used to speak very slowly initially. Now his volume is coming back. So I think it has helped him in that. Also, the breath control, which was an issue, he used to get tired even after speaking one word, single word. When I used to make him repeat, it has helped him in improving his breath control and improving his breath in speaking 2 to 3 words. So I, with my experience as well, highly recommend these things, like the sound one. Then I used to make him say countings. I used to switch on the timer and I used to tell him count till 100. See in how many minutes or seconds you're able to do this. To again develop some breath control and continuity so that he's able to speak continuously. Like I am speaking without a pause. So to develop that, I did. Yeah, you're muted. Yeah. Yes. Also, singing music helps. Music heals. Yes. So, and the mantras, I have made his diary, and I make him write those mantras, like from his left hand because his right hand. So he used to write those mantras. They're like, I started with one mantra, then gradually we have reached up to 15 mantras, which he writes from his left hand. Okay. And I make him recite those mantras as well. While he's writing, one single word recitation I've started. So that has also helped. And also the songs which he used to like earlier, that has also helped. Like I make him listen music, I make him repeat those songs, short paras. So yes. I forgot to tell one point. When the person is strained, now thanks to Akanksha for reminding me, when they are strained or tired or upset, we have to give them a break. We cannot expect we cannot expect them to speak clearly or even form a word. Even now, sometimes by the time he forms one word, he feels tired. So we leave it there. Yes, please take a break. That is one thing. So tiredness or emotional upset or even, okay, I don't want to talk. No, it happens many times. No, I don't feel like talking. Okay, leave it then. Give them, it's their own personal time. That time, at that point of time, leave it. We have to leave it. Yes, they will bounce back. They will definitely bounce back, but it will take time. We have to leave it there. Or they're not feeling well. It happens. They're not feeling well, or they're tired. To this, yeah. I also want not able to add express something to this. Yes. We have to Also, give them a break.
Yes, it is very, very important. Please, 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 everyone, don't lose your patience. More than the person, the stroke survivor, the caregivers have to be patient. You cannot expect recovery in a day, in a month, even in a year. You really have to like do regular, consistent inputs. You have to give from your side. You have to do the hard work with them, and it is very important to keep them at peace and not to pressurize them, because उससे कुछ फायदा नहीं होगा. उस उन और किसी की रिकवरी किसी से कंपेयर नहीं करनी चाहिए. I used to get a lot impatient and I used to literally, it used to affect my mental health that someone has improved in 8 months, someone has improved in 12 months. Why he's not improving in 23 months? This has happened with me. I have like collapsed many times, but it will indirectly lower their morale. It will not help them. You really have to be very patient. It is important to keep them happy. कुछ सालों के लिए मैं seriously मैं यही बोलूंगी, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लिटरली खुद को भूल के उनको देखना पड़ता है, बिकॉज वो ऐसे वल्नरेबल स्टेट में होते हैं that you have to give your 200% to them. But if you will invest that time in them, they will come back. खुद को पूरी तरीके से मत निग्लेक्ट करो, डेफिनेटली नॉट, बट कुछ कुछ छोटे छोटे सैक्रिफाइस खुद के करने पड़ जाते हैं टू प्रायोरिटाइज देयर हैप्पीनेस, बिकॉज जितना वो खुश रहेंगे उतनी उनकी हीलिंग होगी. वी कांट सी दैट, but back of their mind, in their subconscious mind, in their active mind, they are healing. If they are laughing, they are healing. If they are happy, they are healing. If they are smiling, they are healing. It is very critical to keep them happy. It is also very important to be rational with their demands and their, like, you cannot fulfill every demand. You have to make them understand what is important in this need of the hour. You have to like उन्हें reality से वाकिफ कराना बहुत जरूरी है. बहला फुसला के नहीं हो सकता ज्यादा कुछ. थोड़े टाइम के लिए जो चीज, अगर किसी चीज से थोड़ा बेनिफिट हो रहा है आप कर सकते हो, बट यू कैन नॉट गिव देम फॉल्स होप. Will really lower down their morale. This has happened with my husband. Everyone used to give them false hope. In 1 month you'll be able to walk, in 1 month you'll be able to speak. अभी कर लो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ऐसे ठीक हो जाओ. It has happened a lot with my husband. I have seen the consequences of false hope. The person, it doesn't help them. Everyone is good enough to understand, able enough to understand how how it can lower down the morale. I don't want to explain and elaborate this topic. So just keep them happy. Laughter is the best medicine, as it has been said by people always. So it is actually a best medicine. Crack jokes with them. Play Ludo with them, play cards with them, do different little activities which keeps them occupied. Play chess. Chess is a brilliant mind game. I play chess with him every other day. Like I try to motivate him. I play tambola with him so that he tries to speak those numbers. It has been a real struggle with numbers. Initially, if we had to say 7, he used to recall all the numbers before 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So I started with small activities, like we teach kids. I started that way. I started how many heads do Ravan has? Think and answer. Spontaneous questions I used to do. I used to make those list of questions, 8 to 10 questions every day, different questions, जिसमें numbering में answer हो. And I used to do that. नवरात्रों में कितने दिन होते हैं? He used to say, he initially used to count those and then say 9.
धीरे धीरे he used to spontaneously tell me 9. I used to repeat those questions so that spontaneously वो numbers आने लगे और वो answers में आने लगे, so that he doesn't have to repeat. So that helped me. The questionnaire game really helped me a lot. But yes, it will show results in months. So you have to do that thing regularly. Make a set of questions which has target only 1 to 5 first, then or 1 to 10, say 1 to 10. Kuch aise questions with how many eyes do you have? He'll say 2. Such way, you know, you have to make such questions and then repeat with those with them. Shuffle करके repeat करो questions so that वो भी bored ना हो, उनका भी excitement level बना रहे, उन्हें ये ना लगे boredom मेरे साथ हर रोज यही पूछा जा रहा है. But he will feel very happy when he'll be able to say those answers spontaneously, those numbers spontaneously. So number questioning मैंने काफी करी है, and he is able to say numbers now. Like 3-word number में अभी थोड़ा दिक्कत है, but धीरे धीरे he tries, he take a pause, 200, then he will take a pause, 20, then he will take a pause, and then he'll say the last number 5. 225 में थोड़ा सा slowly बोल देते हैं, लेकिन मेरे को output मिल रहा है उसका, and I'm sure within few days, within few months maybe, he'll be able to speak properly. Yes, yes. So yes, that's it from Great. me. I think patience, as you said, and as you said, you know, laughter, if they are laughing, they're healing. That's, I think, putting it very, Yes, definitely. putting it very well. And indeed, yes, one has to be very, 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 very patient. No denying that, while accepting, as you say, the reality, not giving many, you know, exaggerated hopes also, so that you know that yes, we know that everyone knows that yes, with confidence and with time, improvements होंगी. It will happen. It will definitely happen. जरूर आप जो देख रहे हैं ये होगा. जैसे आप, as you said, 3 digits numbers, I'm sure soon you will see that also. You will see that happening. Indeed. I'm seeing यहाँ पर नंदा कुमारी जी हैं, रामाकृष्णन. Anyone wants to say anything, please unmute, because we don't, this is a free time, we should interact with each other. Anyone wants to say anything? Parul ji is here. You can unmute, you can put off your video, then we can discuss. Maybe Shruti can talk about how to take the next sessions. What are the plans like? See, the purpose of this meeting is basically conversing, talking amongst all of us. Hello. रामाकृष्णा जी, हाँ बोलिए आप. Namaste. Namaste. I'm a family friend of Sri Guru Raj, and I have a friend here by name Nandakumari. Okay. Nandakumari's brother-in-law, husband's brother, got the same problem almost. It's around 18 months over. It's a participant here, and couple of years back, like my maternal uncle suffered nearly for 28 years. He was in Air Force, Bangalore, and he had a stroke, and it got operated long back in Pune Military Hospital. And so I'm trying my best to participate in this kind of things, and whatever help I can do, trying to do that. Great, sir. And you said Nanda Kumari ji is also here, and she is also has had a similar situation. I did not know you there. I will just call her and tell her to have a word. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Good to have you, sir. Sorry? I said good to have you here.
Yeah, thank you. Thank you too. Shruti ji has done a wonderful work. Yeah. Thank you. All the best. Very, very, I must say that, lot of hard work is Yes. gone into that, and very positive, very high levels of motivation, and certainly it is helping. Yeah. It is helping. I can see Parulji has raised her hand. Parulji, maybe you can. Yes, sir. Actually, you called my name in a little before also, but everybody else was speaking. So I thought that they should get a first chance. And, amazing session. I'm really happy the way, Shruti has tried to explain how to start with. Because with my brother, he's able to speak only one word, ma bas bolta hai. So I'm really happy the three kind of different words which she has explained, that how we should start talking about it, and how we should starting with the different swar, as she said. So a really nice and worthwhile session, and I'm really happy to see her efforts, because the whole part is the kind of efforts which everybody has taken. Both of them have taken a lot of efforts, so that is really appreciated. So thank you so much for the session, sir. See, what going forward, I think what will be also good, Parulji, if your brother can join in, or even if they see, I mean, even Sir, I push them every time, because he is facing in such a crisis, because now it's 7-8 months. And as the other person also said, you should not give false hope. So my bhabhi has been giving him he will be able to speak after tracheostomy when this gets out. So when this recovers. So he doesn't wants to interact at all. And you won't believe, with my mobile phone, when they teach, I record everything with my mobile phone, and then I shift it on a WhatsApp to him so that he can see. But getting him, maybe after some time they would like to participate in the session. Otherwise it becomes very difficult for him to accept this. And as I told you, because they have kept a physiotherapist and also a speech therapist, so they say that if you try to practice some other way, you will forget the original way. So people live under a lot of influence also. No, But I'm trying hard. whenever you think it's the right time, whenever you feel it, they are comfortable. Time is right, sir, because I think this forum will work wonders from him, because I'm seeing everybody here. They have all started from the same level. So perhaps if he sees ki after 2 years, 3 years, they can speak, even I can. So forum is correct, but the whole part is that he should be open. Because as of now, even if I switch on a laptop before him, he shuts down. So now he has just asked me, you be at Noida, I stay in Noida, he stays in Gurgaon. So he doesn't even, he's saying a lot of COVID is there, so you don't come over here. The reason he's doing all that is because I just try to make him do things. So there's a lot of repulsion at the moment. But yes, I hope that at some point in time, perhaps he would be open to this. But I'm very happy to see all of them and the way they have explained. No, I'm sure Shruti ji has certainly she has made a lot of efforts. Actually, sir. Sorry. Because what happens is, aphasia is, because of your mouth movements, we actually don't monitor how to make a word out. How do we speak? We don't concentrate on that. So aphasia के विषय में मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स बताते हैं, इवन स्पीच थेरेपिस्ट बताते हैं, बट स्पीच एक्चुअली निकालना कैसे है वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है. That's what I was trying to learn from Shruti, that how she has started, which are the easy low hanging swar or alphabets. So that was the thing I was closely observing through her session. Ambika ji is also here. She's a speech language pathologist. Maybe she can share a few thoughts or tell us some more further tips how to take this forward. Ambika ji, if you are there, आप कुछ बोलिए. Can you hear me, Ambika ji? Maybe not. So Shruti, then if you can tell how to take, what will be the next steps? How do you, कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं? How do you propose meeting में? What are the plan like? So we are seeing the last slide. June is the aphasia awareness month. So all of you please give tips. Like what happens, I will tell you one small experience.
what happens in hospital? We are all worried. We want to bring them back home. फिर सोचते हैं घर में जाके देखते हैं किसको देखे, स्पीच थेरेपिस्ट को ढूंढते हैं. कई बार कई लोगों को पता भी नहीं होता कि स्पीच थेरेपिस्ट चाहिए, कैसे ढूंढे, कहाँ पे मिलेंगे. So in this group, what we have, the Stroke Support India group, if we can do something to spread the word about aphasia, please give some ideas. That is the first thing. Second thing is, here there is a photo where we can see some senior citizens sitting across the table, and they're all discussing. That is actually a aphasia communication center. This happens in many countries where people meet in scheduled intervals. They share some good thoughts. They talk about a few things. In fact, they are comfortable in the company of those people because they know each one has little bit speech deficit, but it does not matter at all. They can express. So I want to tell one thing now. With aphasia, our goal should be, it is a long-term goal that the person should be able to go out with, okay, fine, with somebody's support, fine, or with minimum support, and they should be able to manage on their own. That is the ultimate goal, isn't it? If we talk to the families or the caregivers, the loved ones, when will it happen? Baba, we will be thinking that they stand on their own feet. I know it takes time. We will make use of this forum. We can't meet like that personally. All of us right now, we are in different parts of the country. If everybody is fine, we will meet once a month. Let everyone prepare on something, whatever they want to talk. Just let them express. Let them talk in turns, or let them have some fun through this session. Sir, it will be amazing. They will definitely wait for these sessions. I was searching for something of this kind. When you first proposed, can we get started with something? First, I thought, okay, I had some issues with the laptop and with children's school. I told you everything. Then I thought, opportunity comes once. If we start giving reasons, we will give enough reasons to postpone it indefinitely. So it will never happen. So I also had to go for a vaccination. Too many issues around. Come what may, we have to start it off. Once we start it, it will get going. Yes. So all of you, please think about this. You see, they are all so happy. Just see that photograph. They are senior citizens. This forum, we can make use of this forum to help improve speech. And we will share a lot of ideas. Maybe we will all search through the internet. Whatever we share, we can put it in text through the group. And I request Ramakrishnan, I call him Ramu Anna, please tell your friend to join this group. We will give links. So even Wednesday's physiotherapy is happening. So he can be a part of that. So we can make this group bigger. We can reach to a larger number of people. And yes, it should help them to progress in speech one level after other. First, if they're not able to produce sounds, yes, if they're able to produce sounds, it's a great achievement. If they're not able to produce sounds, and just a minute. So nice. If they're not able to produce sounds, if they're not able to produce sounds, if they have come to that sound level, that is a fantastic improvement. If they have come to the sound level, they're able to produce all the sounds, then make small words. They're able to speak small words. Yes, that's another level of achievement going further. Then again, if we join two words, they're able to speak combination words. That is one more level. Sir, what I feel, it is well proven that in Broca's aphasia, they can't speak these connecting words. They can speak the naming words, which I will take it up in the next session, and also as activity also. These things, again, we will put forward as activity. Take it as an activity. Please try these things. Give your feedback. If you're all fine, we will meet once a month. We will share thoughts, ideas. We will see to that caregivers will not speak.
We will help them speak. They will take the session forward. Slowly, in a few months, we will see they will only become hosts and they will not require our support. I wish everybody will progress step by step and they're happy. Please use this forum to progress, to learn. Please give ideas. It's not that it is one person's ideas, it's everybody involved as much as possible. Let us all progress together. That is what I want to say. That is indeed, very appropriate, because ultimately it's a group activity. And just one quick thing I wanted to add there, it's not necessary, even the time we can vary depending upon the comfort of people. Not necessary that we need to have in the evening. We can have it, 10 to 1, 10 to 12. But as we go forward, we have those flexibility. We can adjust that also. And Ramakrishnan ji, you wanted to say something? Did I see you wanted to say something? No. Nothing. I can. Go on, Sorry. go on. Nothing. I can see Ambika is here. Ambika, you want to say something before we close now? Hi, how are you? Fine, good. So, I don't know how. I was listening the whole time. It's just 10:15 in the morning here. I was listening and doing other things, but it was fantastic. A great presentation. Such good information. And I think what really resonates is like the patience. You have to really have patience. Sometimes that's the key factor. So I think that was hopefully a good reminder to everyone, just to be patient. We look forward to all your inputs also. Whatever you can think of, you can put on the group, or you can share with Shruti ji or with me. Sure. In fact, I was reading somewhere there are some classes for caregivers also. There is some links I was seeing somewhere. Probably I'll share that. So whatever we can do to make this effective. Any inputs? No, that's great. That will be great. I'm going to be working with Lingraphica, which is in New Jersey, and it's also they have different apps. So the more I learn from there, I'll be sure to share as the months go by. Yeah, sure. That will be great. Yeah. Fine, then we'll Thank you, close the Shruti. meeting. That was great. Shruti, great effort, and we will take it forward. Take it to a monthly meeting next week also, and then we will further. I'm not going to be on next week. Today we had a day off for Memorial Day in New Jersey, so I happen to be off today. But next week I'm definitely going to be in the office. So if I chime in, I probably won't be able to speak, but I'll try my best to. That's okay. Yeah. Well, thanks a lot. All right. Thank you. Thanks so much. Yeah. Bye. Okay, then everyone. Thank you. So I have a point. Sir, I have a few things I have listed out for next week. Yeah. Please give your feedback. I will just read them out. Next week, I would like to discuss about understanding commands. Sir, when we give them a command, it may be difficult for them to understand or to repeat. So it's just like a small game. So pick up the pen. So they have to pick up the pen. You please do it at home. This will help them to strengthen their they may be good in hearing, but they have to hear, and the brain is the one which does the processing. So pick up the pen and pick up the book. First, they have to pick up the pen and next the book. This is an activity, but we can be very innovative with this activity, and it will also make them expressive along with that. Next is initiation of reading. So Akanksha had asked, Prashant ji is finding it difficult to read and write. So I would like to discuss something about initiating reading, how we can start to help them start reading and writing. So writing, please, whatever is available with you, whatever your family member is comfortable with, you please make it available. Most of them will be writing by now, but if not, it is very well proven that
Writing will stimulate speech. So I will share all these things, initiating reading and writing and comprehension. So it so happens that we are all in a group, we are talking, but we don't know how much of it they have understood, how much they can comprehend. We are all in a group, we are talking for many months. I was thinking my husband is understanding whatever is coming on the TV. He is understanding all the news. He is understanding whatever is there in the movie. Then gradually I came to know that he is not able to understand everything, but his comprehension has improved over a period of time. So we will be discussing that. And cognition. Yes, it is well said that it does not affect the person's intellect, but Paul Broca, who has on the scientist's name, this Broca's aphasia itself is named. He himself has said that yes, cognition will be affected to some extent, because yesterday when I was discussing with my husband, he said yes, cognition will be affected to some extent. It may not be great. That is what he says. To some extent, it will be affected, but we can come out of it. With some amount of effort, we can come out of it. And activities related to reading, writing, cognition, comprehension. Then cueing techniques in aphasia, like we have to help them to speak. For example, saying the first sound or giving a clue. There's a particular method. What is the first approach we have to do? For example, now if I say the first sound, he will say the word. If I say the first word, he will say a short sentence. So what is the tips or what is the clues that we can give to help them open up to say a word? And some web resources, and as Ambika said, Lingraphica is a wonderful resource. Some web resources, and I will share some YouTube links. I wanted to all that today. I thought it'll burden the session, like we may not be able to grasp everything in one day. Lot of web resources, like there are some good therapists, or there is a stroke survivor who has recorded a video consequently for 10 years, which shows her progress. I'll just share the links. You please go see whenever you have time. Her name is Sarah Scott. She has gone through one intensive therapy program. She was 18. Then she got a driver's license. She started driving around. Her latest video, she says she is engaged. She looks lovely, and we can see the happiness that she's engaged, and she's speaking wonderfully. Now it is 10 years. All of you, please don't think 10 years. No, it's not. Yes, she has put that amount of effort, and fine, it's with the family. They are there. They're almost there. We should never give up, because we don't know, we may be very close to our goal. God will want to give us. God is waiting to bless us. God helps those who help themselves. So just keep going. Push yourself some more. Yes, He is there waiting to bless us. He knows the right time. We don't know the right time. It will happen. Good things will happen. Whatever had to happen, good, bad, everything is a part of life. Those negativities, they've gone. Now it is past. It is time to recover. It is only that we have to push ourselves. Be positive. In positivity lies hope. Yes, we will reach our goal. But let us not, set false goals or false hope. Let us be realistic in our journey. We should not think that, yes, 100%. Whatever there is 100%. How much part of our brain do we use today? We don't use our brain entirely. Or we all speak well. How much of what we speak every day has meaning? So if they are able to express themselves better, manage themselves, yes, the goal is reached. Still there is scope for improvement. Let us help them to speak much better, comprehend much better. So we all keep pushing ourselves. And yes, that kind of web resources. And there are people who say, they have shown how to do therapies, then how the caregivers should take care of themselves. So I'll get some more time. I will prepare on the reading and writing aspect, because yes, everybody would want their loved ones
to express themselves better. Whoever the speech therapist we meet, they say he is improving in reading and writing. Please concentrate on verbal commands. So challenges are there. You speak more, you improve in speech. You read more, you improve in your reading. You write more, you improve in your writing. But is it possible to do everything in one day? No, it's not possible. So we have this one life to live. We have done like that for 2 years. So believe me, we have done like that. We have a schedule, morning till night. Then we decided, yes, this will take time. We accepted it. This will take time. We have to enjoy life along with therapies. So now we have certain time for all that. And they have time, and we have time for games. We have time for walking. We have to make time for everything. If we are involved totally in therapy, we will be involved in that, and we will forget to enjoy small joys of life. So let us do it as a whole, life as a whole. Let us live life to the fullest. Let us lead life as a whole. As Forum said last week in her physiotherapy, she said, treat the body as a whole, not the affected part. So that was a very big takeaway from Forum session last week. So live life to the fullest. Now it's Corona, we can't go out. And going out, I know it is difficult. We have faced things. But once in a while, when you go out, enjoy that. When you take the child to the park, enjoy that. You sing rhymes with the child, you see the speech will improve fantastically. I can tell you. So live life to the fullest. So throughout the day, involving in therapy, fine. Whatever you do, speak along with that. You want to lift a glass of water, try to do with the affected side. So next week, I'm concentrating on reading and writing. So everybody, please plan your day in such a way that 45 minutes you will sit for speech, or 45 minutes. In that 10 minutes of writing, 10 minutes of reading, and some 15 minutes of mouth exercises. Okay, fine, that is enough. You can't concentrate after that. Then once again in the evening, rest of the day, this Corona, it's not been good. But when we are safe at home, let us plan ourselves in such a way that by the time this pandemic is over, it is safe. We will go out, we will take them out, and we will see that their level of communication has improved. So let us take use of this COVID time to improve ourselves. So that is all I want to say at this point of time. And looking forward to next week. Any tips, anything, please feel free to say. Even if it is, if the feedback is not so positive, yes, it's very good. First, we will consider that only. So over to you, sir. Thank you. Thank you very much. Absolutely. Very well put. And we will take going forward. And I will also discuss with you, Shruti ji, some thoughts that I have. And certainly next week, we will take it further and on the topics that you have mentioned. Thank you very much. Thanks a lot for all your efforts. It was wonderful. And thanks everyone. All the credit goes to you, sir. You have given the opportunity. It is always a collaboration. I mean, I must really say that it is entirely your initiative. I must say that. And it's a wonderful effort. I'm sure going forward it will help. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you. Thank you, everyone. See you all Thank next you. week. You all See you next all week. next week. Stay safe. Stay Yes. all. Thank Yes. you. Thank you. Thank you.